ओके, जैसे आप लोग है ना, वी ऑल आर वन टुगेदर वॉकिंग द पाथ टुगेदर. Only thing is that right now when we are sitting in a sangha, we are holding each other, inspiring each other. And Ramya has taken this lead to bring us all together on this, Guru stories. So इसलिए just being available. Only thing what I have learned, I tell you, whenever Gurudev has given me any project, I have just been there. Yes, there is nothing else which has been in my mind. कि नहीं मैं सोचूं कि जाऊं नहीं जाऊं, कभी ऐसा नहीं हुआ. इसलिए बोलते हैं ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, है ना. जो मंत्र, द रूट ऑफ द मंत्र आर द वर्ड्स ऑफ द गुरु. When we honor what Guru says us to do, we are honoring the master. So there should be not even an iota of doubt when Gurudev gives you any seva, irrespective of whatever seva it is. When it comes from the master, it is for our upliftment, not for him. He can get it done himself. It is for us to grow. I tell you, जब मुझे गुरुजी 2019 में गुरुजी पुणे आए थे दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे बोला कि वंदना तुम कश्मीर चले जाओ, एंड साथ में तुरंत ऐड की. मैंने कहा ठीक है गुरुजी, एंड इमीडिएटली ही एडेड अभी नहीं जाना, बिकॉज ही थॉट दैट पता नहीं अभी पैक करके निकल जाएगी. Because whatever he says, any point of time, I'm just like this. Okay, I'll go and I will not see anything else. So then he said, "Abhi nahi jana, abhi bahut thand hai December mein." And then 2020 March around Shivratri time, I meet again Gurudev. गंगा कुटीर में उनसे मैं मिलती हूँ, तो गुरुजी बोलते हैं, अच्छा वरना अब तुम चले जाओ कश्मीर. मैंने कहा ठीक है गुरुजी. और पता है उस समय कोविड वाज एट पीक मतलब पीक. मुझे सबने बोला मतलब बाहर क्यों जा रहे हो वगैरह ये सब, बिकॉज आई सेड नथिंग डूइंग. Gurudev has said you have to reach Kashmir, means I have to reach Kashmir. And the moment I landed in Kashmir, next day lockdown. March 2020. और मैं किसी को नहीं जानती थी कश्मीर में, मतलब not even a single soul. और ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे फिर गुरुजी ने चेक किया किस तरह से आई वाज हियर कंफर्टेबली वगैरह सब कुछ. देन ही जस्ट टोल्ड मी अभी थोड़े टाइम के लिए अंदर है ना, पर अगर मौका मिले एक इंटरव्यू देना. हाँ, कहीं यू गिव वन इंटरव्यू. अब मुझे पता ही नहीं किसको इंटरव्यू दे, लॉकडाउन है, किसी को जानती नहीं, नथिंग. आई सेड हाँ गुरुजी मैं कर लूंगी. एंड वहीं पर जहां मैं रहती थी वहां साइड में ही एक छोटा सा मंदिर था, तो मैं वहां चली गई नेक्स्ट डे सुबह. तो वहां कोई मंदिर में था, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हैं. he said he is a journalist. तो मैंने कहा बहुत अच्छा, अब कहीं से तो शुरू करना था. मैंने कहा मेरा अपना एक इंटरव्यू कहीं फिक्स करवा दो, किसी भी जगह, दूरदर्शन में करा दो, कश्मीर दूरदर्शन में कोई चैनल में करा दो. सो आई जस्ट वांट टू गिव वन इंटरव्यू. तो वो बोले ठीक है मैं कनेक्ट कर दूंगा, पर पता नहीं हाँ यहाँ पर हाउ इट विल बी टेकन. you have some apprehensions because of the place. So when I connected with the person, then they fixed it. They called me. So when I reached there, तो वो जो प्रोड्यूसर है वहां पर, तो मुझे बोल रहे हैं, अच्छा आवाज कम आ रही है क्या मेरी रम्या? अच्छा ठीक है. तो मुझे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, मैडम आप ना आर्ट ऑफ लिविंग नहीं बोलना, यहाँ पर थोड़ा सा अलग माहौल है, तो आप मैंने कहा फिर तो मैं इंटरव्यू करूंगी ही नहीं. That is not the purpose. Then it doesn't solve my purpose of coming if you are telling me not to. He said नहीं यहाँ पर it will be little difficult. मैं 2020 की बात कर रही हूँ. तो then they said नहीं मैडम वगैरह, and it was without any retake, it was live, तो उसमें एडिट भी नहीं कर सकते थे. तो आई जस्ट ही सेड ठीक है मैडम 20 मिनट्स का, बट देन ज्यादा आप नहीं बोलना. मैंने कहा नहीं बोलना पड़ेगा मुझे, आपको करना पड़ेगा. एंड इट हैपेंड, एंड इट वाज फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट का इंटरव्यू था, 40 मिनट का हो गया लाइव. और then he was praising so much.
he said कि I really didn't know that your organization is doing so much of work. This is कभी कभी क्या होता है, जिस चीज का हमें पता नहीं होता है उसका हमें apprehension होता है कि नहीं, है ना? तो this is what, when Guru Sankalpa is there, no, when we go with the flow of that Sankalpa, things happen for us. अगर मैं ये सोचती, गुरुजी ने बोला कि इंटरव्यू करना, मैं किसी को मैं पहचानती हूँ ना, कैसे होगा गुरुजी, क्या करूंगी वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं। और देखो कैसे मिला वो मंदिर में उसी समय, वो जर्नलिस्ट भी। तो only thing is that we need to be aligned with the vision of the master, with the sankalpa of the master. Where in Kashmir, I'm in Srinagar, but I have visited all the 10 districts of Srinagar. तो ऐसा शुरुआत हो गया। और बाद में बिकॉज कोविड टाइम था, तो पहले गुरुजी थोड़ा बोले थे कि जस्ट बी केयरफुल, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि दिस वाज द राइट अपॉर्चुनिटी टू गो आउट एंड वर्क, so then I told Gurudev, I said, Gurudev, can I go out? Because अब तक मैं गुरुजी का भी थोड़ा सा, because he also had told me ध्यान रखना। तो then he said ठीक है। So what I did then, because मैं आपको बताऊं, मुझे ना एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पता नहीं था पहले, because I have been in corporates. I have studied from Pune, did MBA there, HR में, and then been in corporates, worked with different companies. तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ मालूम नहीं। See how Gurudev, whatever you don't know, he ensures you know that. तो जैसे ही मैं कश्मीर आई, तो मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ किससे मिलूं, लॉकडाउन भी था। The first person I met here was because यहाँ पर LG का रूल है, it has been the Lieutenant Governor rules the state. So the first thing I met was Divisional Commissioner Kashmir. So I just told him, I said, because of the COVID, काफी सारे हॉस्पिटल्स भर गए थे कश्मीर में, बहुत बुरी हालत थी, जैसे पूरा इंडिया में था, और मैं नई आई थी तब। तो मैंने कहा कि सर, इफ आई कैन हेल्प यू इन एनी विच वेज। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि कुछ उनको पीपी किट्स वगैरह चाहिए, तो वो मैंने दे दिया। फिर दूसरा, आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई वुड लाइक टू टेक प्रोग्राम्स, आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम, बिकॉज ये हेल्प करेगा सब जगह। तो उनको तो थोड़ा सा पहले ये लगा कि मैडम यहाँ पर तो मुझे पता नहीं, सब जगह यही होता है पहले, जो थोड़ा सा ऐसे जोन्स होते हैं। तो मैडम कश्मीर में कैसे करेंगे आप? जम्मू में तो बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। एंड ही वाज वेरी praising the work that Art of Living is doing, but then he was little apprehensive again, Kashmir. Then I just told him, I said, सर एक काम करना आप प्लीज। तो उन्होंने बोला क्या? तो मैंने कहा मुझे ना जितने भी यहाँ डीसीज है, यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, तो मैंने कहा जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, मेरी उनसे एक मीटिंग करवा दो। अब मेरे भी देखो गट्स कितने थे कि मैं उनको बोलूंगी सारे डीसीज के साथ करवा दो मीटिंग, बिकॉज इट इज नॉट ऑल IS officers which are handling different districts during peak of COVID. And I just told them, just connect me with them. Then he said, Madam, आप तो नहीं छोड़ोगे। मैंने कहा, that is the reason I am here, to help out, because this is not something I'm asking for myself. I'm just offering to help you. So fortunately, he was taking a COVID review meeting with all the DCs of 10 districts of Kashmir, और उसमें SPs भी थे सारे उस मीटिंग में, और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देयर। तो उनका मीटिंग हो गया, तो उसके बाद ही जस्ट टोल्ड मी, मैं सिर्फ बोलूंगा कि आप यहाँ पर हैं, आप खुद आगे बोलना। मैंने कहा डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी बाद में। तो आफ्टर दैट आई जस्ट स्पोक एंड I just mentioned about the programs and how it will help you, and because of the constraints that time people had. And then one DC said, definitely yes, we would like to have it, or we'll send a vehicle to you, because they're very far out. यहाँ से 4-4 घंटे लगते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो ऐसा करते करते पूरा 10 डिस्ट्रिक्ट में कोर्स हो गया, और कोविड के टाइम 2000 people did the course during that time in COVID. And I tell you, I think सिर्फ मेरा प्रोग्राम था पूरा वर्ल्ड में जो ऑफलाइन था,
ऑनलाइन नहीं था, बिकॉज आई गिव देम अ प्रॉमिस दैट आई विल फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स। मैं जितना भी आपका प्रोटोकॉल है, सैनिटाइजेशन वगैरह, ये सब, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क अंदर, फिर मास्क बाहर छोड़ने ना, व्हेनेवर वी आर ब्रीथिंग वी हैव टू रिमूव द मास्क वगैरह, वो सब। मैंने कहा आई विल टेक गारंटी, किसी को कुछ नहीं होगा। बस आप, बिकॉज यहाँ पर क्यों मैंने ऑनलाइन नहीं किया, बिकॉज कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम था इंटरनेट का। अभी तो इंटरनेट चल रहा है यहाँ पर उस समय नहीं था। तो जितने भी ये 2000 लोगों ने प्रोग्राम किए, ये सब हमने कोविड में जब सब लोग ऑनलाइन कर रहे थे, मैंने ऑफलाइन किया। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि बहुत लोगों ने बहुत काम किया। माइंड इज जस्ट स्पेक्ट इन दैट एंटायर body of work that people have done. But why I'm sharing this is that if we have that alignment with the master, things just happen for you. और दूसरा क्या है कि मैंने ना, जब से मैं कश्मीर में आई हूँ, यहाँ आपको पता है कितना सेंसिटिव चीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ना यहाँ पर कभी कुछ प्लान नहीं किया है, ये एक सीक्रेट बात है। जैसे सब लोग बोलते हैं हमने बहुत सारा टू डू लिस्ट बनाया होगा, वंदना ने ये सब। सच में बताऊं, कुछ भी नहीं। आई जस्ट वर्क बाय इंट्यूशन। एंड देन बिकॉज यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप कितना भी प्लान करो। तो द मोमेंट वॉट एवर कम्स टू माई माइंड, आई जस्ट गो एंड डू इट दैट मोमेंट। And it is only, I tell you, it just happens with the grace. It's not that I am doing something extraordinary. People are doing 1,000 times more extraordinary things, but I'm so grateful that the master chose me to be here. And as I said, when I came to Kashmir, nobody knew that I exist, but at least now people know that there is somebody from Art of Living here. And I'm sure, earlier also, before me, people have come, worked in Kashmir, because Gurudev has given different responsibilities to different people at different point of time. So I was given this responsibility in 2020. And I remember, when I was in Kashmir during that time, तो किसी ने एक सीनियर टीचर है, दिल्ली में रहते हैं वो, गवर्नमेंट ऑफिस में सीनियर ऑफिसर रहे हैं, कश्मीर में भी उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला, ही वाज इन चार्ज ऑफ कोविड, हेडिंग द कोविड रीजन फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा ना कोविड रिव्यू मीटिंग था दिल्ली में, एलजी के साथ, मनोज सिन्हा जी के साथ, मैं तब की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला, तो हम सब बात कर रहे थे, तो मनोज सिन्हा जी बोले कि वो वंदना दफ्तरी जो है ना, बहुत काम कर रही है आर्ट ऑफ लिविंग की जो है, तो आप मिले हो क्या उनसे? उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने कहा मैं तो गवर्नर से नहीं मिली हूँ, बिकॉज मनोज सिन्हा जी इज द गवर्नर हियर। तो मैंने कहा मैं तो, बोले ऐसा कैसे हो सकता है वंदना जी, वो आपके बारे में बोल रहे थे, आप मिले नहीं। मैंने कहा मैं सबसे मिली हूँ, बिकॉज डीसीज नो मी, बिकॉज व्हेन यू विजिट ऑल द districts, the DCs will know you, right? The deputy commissioners. So when they know that somebody is working, the governor definitely gets to know. So फिर बीच में जब मैं यहाँ से वाइंड अप कर रही थी उस समय, तो गुरुदेव ने बोले तुम गवर्नर से मिले क्या वहां पर? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, सबसे मिली हूँ पर गवर्नर से नहीं मिली। तो देन ही सेड मिल लेना। हाँ, मैंने कहा, मैंने गुरुजी को ऐसे कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं मिलूंगी। Seriously, that time I didn't know how, but I just ensured that I met him, and he was so kind enough. आज भी अभी मैं जिस मीटिंग में थी, मतलब जो इवेंट था जहाँ से I just have come out, he was still there. We had the governor and the law minister, अभी भी चल रहा है session. So I just met him. He was very, very kind enough, very humble, very appreciative of the work Art of Living is doing. तो ये सब आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जब गुरु आपको काम देते हैं ना, तो काम हो जाते हैं। सिर्फ ये है कि अपना दिमाग हम जिस दिन लड़ाना शुरू करें ना, तो उस दिन से ठप हो जाएगा सब, है कि नहीं? This is how the Guru ensures that whatever hidden skills are there inside us, they manifest that point of time.
और जब when there is devotion, मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप डरते नहीं है क्या? मुझे याद है लास्ट ईयर 2020 I think she has some internet problem. She'll just try. Interesting. So lovely, no? did I दीदी आपका I फ्रीज हो गया think था I उसके went बाद। in between somewhere. आप बोल रहे थे लास्ट ईयर इन 2022 उसके बाद नहीं सुना। हाँ हाँ, लास्ट उस समय क्या हुआ था, एकदम से ना दे स्टार्टेड टारगेटिंग हिंदूज, नॉट टूरिस्ट बट दोज। कैन यू हियर मी नाउ? या बिकॉज इंटरनेट इज इशू हियर एंड दैट टू। अभी जहां मैं एरिया में हूँ ना, यहाँ पर बिकॉज ऑल सीनियर ऑफिशियल्स आर देयर, तो जैमर्स भी है। तो अभी क्लियर है? हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा ना इशू हो रहा होगा। So, that time many people were getting targeted and they killed many people also that time, that point of time. तो फिर यहाँ पर उस समय one day before I met the governor and he told me that he is handling the situation there और सब कुछ it will be fine in few days. एंड यहाँ पर गुरुजी ने किसी और को भी भेजा था, तो दैट पर्सन सेड नहीं नहीं, यहाँ पर तो लिस्ट बनाया है किसको टारगेट करेंगे। तो ऑनेस्टली दे हैव मेड अ लिस्ट ऑफ पीपल किसको टारगेट करेंगे। तो मुझे बोला आप तो बिल्कुल आप निकलो यहाँ से। मैंने कहा मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होने वाला, लिस्ट में होगा या नहीं होगा। फिर गुरुजी को पता चला कि यहाँ पर कंडीशन ज्यादा अच्छा नहीं है और जो किसी को भेजा था तो वो भी चले गए यहाँ से। तो देन गुरुजी चेक्ड। तो मैं फिर गुरुजी को बोली, मैंने कहा गुरुजी ये टास्क है मेरा लाइंड अप। तो फिर गुरुजी बोले ठीक है, ये खत्म करके फिर आ जाना, just finish whatever it is, whatever you have. Anyway, after that was November, December, तो मैं वैसे भी आने वाली थी। बट ऐसा है कि जैसे मैं बता रही थी ना, जब डिवोशन होता है ना, देयर इज नो स्कोप ऑफ फियर। व्हेन देयर इज डिवोशन इन यू, देयर इज नॉट, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। फिर जब पूरी तरह हर जगह रोशनी है तो वेयर इज द पॉइंट ऑफ डार्कनेस एनीवेयर, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइटेंड अप। तो बस यही है कि गुरु के साथ जुड़े रहो। और we are so blessed, I tell you, so much blessed that we have got such a amazing guru, amazing master, full of compassion, and he gives all of us a long rope to improve. But the moment if we feel we are doing it, that is the end. Because what is, I tell you honestly, I'm telling you, everything, whatever work I'm able to do, it is just happening. और जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आप प्लान करो फिर लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आप प्लान बना लो, कल पता नहीं कर्फ्यू लग गया होगा। So you never know. So but in that it gives you so much। मुझे कोई अभी बोल रहा था कि आप कैसे, मतलब आपको डर नहीं लगता? आप मैंने जेल में भी कोर्स लिया यहाँ पर, एंड थोड़ा हार्डकोर लोगों के साथ कोर्स लिया। और मुझे वहां जब डीजीपी से मैं मिली तो वो भी मुझे, मैडम आप यहाँ पर कैसे पहुंचे जेल में, यहाँ तो कोई आता नहीं और अकेले आए आप। एनीवे आई कन्विंस्ड हिम फॉर द कोर्स एंड देन ही टोल्ड मी कि आपके साथ हम सीआरपीएफ वगैरह कुछ रखेंगे रिसेशन में। मैंने कहा नहीं, आई डोंट नीड दैट। बट आई टेल यू, while taking the program with them, it gave me such a different perspective. Like Gurudev says, no, nobody is born bad, isn't it? Whatever a person becomes, because whom I was teaching, those people whom I was teaching, they were hardcore
people who had taken up guns, and then taking a class for them, and then they become babies. When after doing the kriya and being in the class, and then you just wonder how fortunate we are that we are able to reach out and help them to come out of their stress. Nahi? And Guru gives us an opportunity to make even a small difference. Like what I was saying, अभी जैसे Chief Justice of India बोल रहे थे, huge purpose. Even this human existence is a drop in this magnanimity of universe, but this existence has a huge purpose. And Gurudev gives us that purpose and the highest purpose, isn't it? Any questions you have? I think we have 15 more minutes. I ensure that I finish on time. No, Didi, you can please go on and on. We don't get to listen Tanya? to stories every day. I think Surbi had a question. No, Surbi, can you please post it again? It's lost in the chat. Surbi What Sari. was it, Rudra Puja? Didi, your story about Rudra Puja. Rudra Puja. See, as I said, no, we are so fortunate. It's just that one fine day, Gurudev told me that I should learn Rudra Puja. So I said, okay. That time we had Pandit Ji. You remember he passed away. I forgot his name. So he just told me how to perform the puja. He taught me the vidhi to perform the puja. And I think now it is since 2014. 2014 was the first time. Damleji. Damleji, correct. Damleji. So he taught me the vidhi to do Rudra Pujas. And since 2014, I've been doing performing Rudra Pujas. So mostly, I think this time, mostly I'll be in Delhi for Rudra Puja. Still, I'll get the confirmation soon. I'm not sure yet, but this is the tentative. I'm been informed. Yet to be confirmed. And what was the another? This is nice. After Kriya, terrorist become therapist, and Naxalite becomes Ashramite. Good one. What else you want to know? Didi, someone is asking, tell us some other inside stories with Gurudev. Inside stories. Gurudev is inside us. That is the story. बट मैंने जैसे कहा ना, अच्छा हिंदी में बोलती हूँ, मतलब किसी भी कोई भी घटना हो ना जीवन में, ऐसा हमेशा सोचना कि गुरुदेव आपका ही इज अ कवच फॉर अस. हमारा वो एक कवच हमेशा बन के रहते. मुझे अभी एकदम से याद आ गया, एक एक बार ना पूना में गुरुजी आए थे. किसी का नया घर इनॉग्रेट करना था, और जैसे ही गुरुजी आए तो सब बीट बाट शुरू हो गया. और देन गुरुदेव हैड टू गो फॉर सम अनदर इवेंट, एंड दिस हाउस वाज इन अ वेरी नेग्लेक्टेड आइसोलेटेड लोकेशन में. तो आपको पता है जैसे ही गुरुजी निकलते हैं ना, तो पूरा जमाना, पूरा वो सब ना एक फ्लीट ऑफ गाड़ियों में सब लोग बैठ के निकल जाते हैं. कोई किसकी गाड़ी कहाँ, किसी को पता नहीं होता. तो एवरीबडी लेफ्ट, और सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड उस जंगल में, और हम आराम से चल रहे हैं. आप सोचे हम यहाँ से निकलेंगे कैसे. तो थोड़ा टाइम हम आगे निकले, और जैसे हम आगे निकले तो हमने एक गाड़ी देखा वापस आते हुए. आई नो दैट लेडी, शी इज अ टीचर इन पूना. तो वो वापस आई, तो वो बोली कि पता है मेरे दिमाग में ना बार बार ऐसा गुरुजी आ रही थी कि पीछे वंदना है, उसको लेके आ जाओ. It was, you understanding the point, it was not, it was shocking for me, my friend, because हमने किसी को बोला भी नहीं कि हम यहाँ पर है या हमको आप लेने के लिए आ जाओ. और मैंने तो इसको बहुत संक्षिप्त में बोला, लेकिन वो बिल्कुल अंधेरी जगह था शाम में, और वहां कोई ऑटो नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था. और वो वापस आई,
अपनी गाड़ी लेके, और वो मुझे बोली कि मुझे ना ऐसे ही बार बार आ रहा था, गुरुजी का कि वन्ना को लेके ले लो, वन्ना को वापस जाओ, सो यू नो इन द माइंड। और वो वापस आई और उसने मुझे और मेरी फ्रेंड को गाड़ी में बिठा के हम पहुंचे। तो इसलिए कुछ भी हो जाए ना, कभी ये नहीं सोचना कि गुरु आपको अकेले छोड़ रहे हैं किसी भी परिस्थिति में। हाँ, जीवन में लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाट वी से, नो अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, वी वैल्यू अदर व्हेन वी हैव एक्सपीरियंस्ड द अदर साइड ऑफ इट, इजंट इट? इसीलिए every situation which is not so good, that enhances our skills in a different way, isn't it? तो इसीलिए हर कोई परिस्थिति जो है ना, हमको वो और निखार लेती है। अभी जैसे मैंने आपको कहा, मैं कश्मीर में जब से आई हूँ ना, मुझे पता ही नहीं था कि वॉट एवर आई एम एबल टू डू राइट नाउ, आई नेवर न्यू आई कैन डू दिस। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द मास्टर, है ना? So when the grace is there, what else is needed? When the master is in your life, that is the real wealth, I tell you. No other wealth in this universe can match the wealth of having a guru in your life. तो बस भक्ति में रहो, और जब भक्ति में है ना, तो और भक्ति भी ना कृपा से ही मिलता है, उसमें भी हमारा कुछ एफर्ट नहीं उसमें। It is just the grace, because the Guru is so compassionate that he has ignited that bhakti in us, that devotion in us, isn't it? So when the devotion is there, everything happens, and the knowledge also is there. Action happens, everything. Karm, jnan, bhakti, सब हो जाता है। भक्ति में तो मुझे तो और कुछ मालूम नहीं, मुझे बस इतना ही आता है। भक्ति में ही मैं रहती हूँ, मुझे ज्यादा कुछ चीजों का ज्ञान नहीं है। और क्या? Someone is asking, तुम्हारे what is our role as a disciple on the path? What are the do's and don'ts of being in both world and the path with Gurudev? What should we keep in mind? गुरु जी बोलते हैं ना, हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ। पहला तो यही है। और दूसरा, जो भी गुरु बोलते हैं ना, just take it as, whatever he has said. Like if he is telling you to do the kriya, do it every day. If he is, he has given so much of knowledge, and as a discipline on the path, follow the master's words. Because हम बोलेंगे कि I love my guru, I love Gurudev so much. Yes, we all love, but are we following his teachings? Yes, accept people and situations as they are. How much are we accepting every day? Just evaluate. It is for each one of us. I'm not telling, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही, मैं मेरे लिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो मेरे लिए भी बोल रही हूँ। तो बस ये है कि गुरुजी बोलते ना, क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट, सिंसियरिटी इन एक्शन, है ना? बस ये फॉलो करो ना, दैट इज द thing, that is it. And Gurudev has said so many things. These are the basic things that we can keep in mind. Just give 100% whatever you are taking up, whether at work, home, or as a devotee. Yes. Your first encounter with Gurudev. My first encounter with Gurudev, हाँ, um, मैंने हैप्पीनेस कोर्स किया था पुणे में। मैंने 2001 5th June, I remember very clearly. And I was in, my teacher is बलविंदर जी। उनसे काफी कुछ सीखने को मिला मुझे, बलविंदर जी से। तो गुरुजी पुणे आने वाले थे, जैसे ही हैप्पीनेस प्रोग्राम किया था। और मेरा ऐसा था कि जैसे मैंने कोर्स किया, पहली बार हैप्पीनेस कोर्स, सो एवरी अदर कोर्स ऑफ बलविंदर जी, आई यूज्ड टू जस्ट गो एंड सिट। मुझे इतना अच्छा लगा था कोर्स। And then slowly I started, getting participants, enrolling people.
बट आई यूज्ड आई थिंक मुझे याद है कि मैंने जब पहला प्रोग्राम किया ना उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली 20 कोर्सेज में मैं बैठी हूँ बिकॉज आई लव्ड इट सो मच एंड देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग ऑर्गेनाइजिंग वगैरह एंड फिर गुरुदेव को आना था पूना में तो गुरुजी ने मैं और एक और हमारी फ्रेंड है प्रमोद ने उनको और मुझे बोला था कि मैं गुरुजी लैंड्स एट एयरपोर्ट आप ना एयरपोर्ट पे गुरुजी की आरती करना so that is the point first time I saw Gurudev. You know, that was my first encounter with the master, the divine, the God. Gurudev is the best encounter specialist. बस हो जाओ बस सारी चिंता छोड़ो एवरी डे स्माइल या दैट इज इट एवरी डे गुरुजी बोले हंसो एंड आई टेल यू देयर इज नथिंग टू बी टेकन सीरियसली आई थिंक आज ही मैंने पढ़ा गुरुजी बोले कोई परेशान कर रहा होगा ना जस्ट कंसिडर हिम एज अ स्केलेटन हिम हर एज अ स्केलेटन एनीवे थोड़े अभी तो हम धरती के ऊपर है थोड़े टाइम तो हम धरती के नीचे चलने वाले हैं you know we right now we are on this planet after some time we are not there we'll be under the ground so there is nothing to be taken seriously I tell you only take Guru seriously huh? Follow his words whatever the master says just follow his words you know एक तत्व अभ्यास जो गुरुदेव बोलते हैं ना जो गुरु ने बोला है बस उसको ही you know and then there will be more you are focused more impediments perhaps that will you know define how determined consistent pursuant you are on the path pursuant you are on the goal on the master because nothing should matter when Guru is there हमारा वो सेफ्टी कवच गुरु है जी 2-3 सवाल हैं. हाँ जी How to overcome the constant need for companionship? constant need of companionship now it is you know कौन सा कंपेनियन चाहिए आपको एक वो संगा वाला का कंपेनियन हाँ स्पेशल वाला. स्पेशल वाला कंपेनियनशिप अच्छा जी गुरुदेव सेज नो अच्छा वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कंपेनियनशिप आर यू से हाँ see if you find somebody who is really good and who and even if the person is compatible according to you that is fine but at the same time I tell you nobody you will find exactly like you because if you're looking 100 qualities in the other person that person is also looking at 100 qualities in you isn't it and again Gurudev says the focus if both of you focus on the knowledge on the path rather than on each other then you grow together yes isn't it so then we find somebody if we want to evolve on the path we should definitely look for the companion who can walk along with us isn't it now there are two things like for us you know certain times see I'm not married huh? I'm single so I have found my companionship with myself because that gives me absolute you know pleasure in the sense that I think you know I'm the best company for myself but when I am with the people I'm totally with the people that doesn't mean that I isolate being with people but the thing is that if you find somebody who has the same interest because you are on this path and definitely you would like to have somebody who just helps you to accelerate to evolve on the path isn't it so if you feel somebody who uh, is there definitely go ahead yes Ramya Tell some miracle stories with Gurudev. I told you no one miracle stories वो जो मैंने अभी बताया था गाड़ी का और दूसरा हाँ यू नो आई वाज इन केदारनाथ 9:45 I think we should 9 I perhaps I always stick by the time so हम लोग 9 कर रहे हैं, थोड़ा चीटिंग कर रहे हैं रोज. चीटिंग रहेगा नहीं गुरु स्टोरी जैसे मैंने कहा ना मिरेकल स्टोरी जैसे मुझे गुरु जी ने ना 2014 आई थिंक 2013 जून जुलाई मुझे लगता है हमेशा जून जुलाई में गुरु जी मुझे कहीं ना कहीं प्लान करते हैं भेजने का तो मैं आश्रम में थी और
ऐसे ही पता चला कि केदारनाथ में ट्रेजेडी हो गया है। और तो मुझे पूछा गया कि आप जाएंगे क्या? मुझे पता ही नहीं था ऑनेस्टली क्या हो गया है, तब तो इतना मोबाइल पे पता नहीं चलता था कि व्हाट हैज हैपेंड। तो मैंने कहा ठीक है, एंड आई वाज वर्किंग दैट टाइम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो और कॉर्पोरेट में हमारा क्या होता था ना, दो दो तीन तीन सूटकेस लेके चले जाना हमेशा हर जगह। नो, दैट वाज द आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग। तो अभी मैं इतना सूटकेस में जाती हूँ, आई ट्रैवल इन अ वेरी स्मॉल लगेज। तो वहां से हम आश्रम से निकले और सीधा पहुंचे ऋषिकेश। ऋषिकेश में लोग बोले कि मैंने वहां से लोग भाग रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, मुझे काम है उधर। तो somehow I reached, because जिस गाड़ी में मैं बैठी थी there was all chances कि वो गाड़ी या तो नीचे जाए या तो ऊपर भगवान के पास पहुंचे। तो somehow I reached केदारनाथ के पास कहीं आश्रम में। तो I tell you, I met people in the villages where in that entire village एक ही घर में चार चार लोग had passed away, I tell you. And it was I just can't now, when I recall it, it is just giving me goosebumps. तो मैं जब एक एक घर गई वहां पर, एक लेडी के चार बेटे चले गए थे, एक लेडी थी उसके दो बेटे हस्बैंड चले गए। ऐसा पूरा गांव का हाल था, पूरा गांव। मुझे याद है वहां पर केदारनाथ मंदिर के वो प्रेसिडेंट। तो उनका बेटा, उन्होंने ना वो शिवलिंग को पकड़ के रखा था, बाप और बेटे ने। तो बाप ने वो शिवलिंग को पकड़ा था और पानी इतना आ रहा था तो बेटे का हाथ छूट गया, एंड देन ही जस्ट वेंट इन दैट वाटर एंड ही पास्ड अवे। तो ऐसे ना मैं दिन में पूरा सुबह से शाम में यही आई यूज्ड टू लिसन टू इट। फिर धीरे धीरे मैंने जब वहां क्रिया कराया तो मुझे वहां सब लोगों ने बोला कि आपने हमको एक नया जन्म, मुझे वो बोले कि हमको लगता है कि हमारे बच्चे आप में आ गए वापस हमारे पास। द प्रेसिडेंट ऑफ दैट केदारनाथ टेम्पल, उसकी जो वाइफ है, वो मुझे बोली कि यू हैव गिवन मी होप टू लिव अगेन। एंड देयर वाज वन लेडी, उसका 1 मंथ का बच्चा था और उसका हस्बैंड था बस। वो हस्बैंड ही पास्ड अवे and she had not eaten for 4 5 days continuously until I reached here. And then they said कि अगर आप नहीं आते ना तो हम पता नहीं, हमने पूरा गांव खाना नहीं खा रहा। Nobody was eating there in that village. बोले कि आप गुरुजी को बोल देना, आपके गुरुजी को कि now we have just started taking small steps to live our life again. So as Guruji says, no, we never know when the divine uses you for his purpose. और मैं बताऊं, I know I am very sensitive when I see things, ऐसा. But that time it was more of a, when you are sent by the Guru, it's more of a witness. Otherwise, if you go with their emotions, you will not be able to handle yourself, right? So it was how Guru transforms people in that situation also. दैट वाज अमेजिंग टू सी। अभी मुझे याद आता ना वो पूरा मंजर, कैसे वहां चले गए थे, तब भी उस समय भी इतनी बॉडीज थी वगैरह, बहुत बुरा हाल था उधर केदारनाथ के आसपास में। बट देन द गुरु ensures and he knows where when he has to send anybody to make even a small difference. और मैं बताऊं, उस पूरे गांव में जो वो 7 10 दिन से कुछ भी नहीं खा रहे थे ना, they just started living their life again. और वो रोज मेरे साथ बैठते थे रात रात पर गांव में। how people in village are so loving, full of love, full of devotion. मेरे साथ रात रात पर बैठे और सबके घर में कोई नहीं, चार चलो कहते बिलीव, mother losing 4 sons, then there another somebody losing husband, 2 sons, मतलब हर एक। फिर then you go to their homes, you meet them and then you see their things, बच्चों की किताबें ये सब, and then they are nowhere. So then when you understand, we see life from a different perspective.
समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? एक बिल्कुल एक अलग नजरिया मिलता है। एंड कभी कभी हमको इतना लगता है ना कि हम ही सब कुछ है, but then when the divine, in the matter of seconds, the divine shows who is having the power. So the more we are grounded, the more grace flows. Yes, I think I have gone beyond time. No, no, Didi. I think it was so beautiful. In the last 4 days, we were listening to so many stories. But with you, we could just take the journey of what all work is happening through Gurudev in such remote areas where it is needed. I think it was so, so inspiring for all of us. हम लोग बस पढ़ते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ काम कर रहा है, वहाँ काम कर रहा है। आई थिंक आप खुद जाके आपने हर जगह किया है। इट इज, और हम लोग छोटे छोटे अपने शहरों में करने में इतना कंफर्ट देखते हैं, एंड हमें सुन के ही इतना गूजबम्स हो रहा है। आई कांट इवन इमेजिन वहाँ रह के कैसा लग रहा होगा। आप एक कोई एकदम पार्टिसिपेंट अगर शेयर करता है अपना दुख तो हमसे हैंडल नहीं होता, एंड थिंक लिसनिंग टू एन एंटायर विलेज क्राई मस्ट हैव बीन, आई डोंट नो, सो क्रेजी। गुरु मेक्स इट हैपन। मुझे तो लगता है हमको ना रम्या की भी स्टोरी सुननी चाहिए। रम्या इज प्रेजिंग एवरीबडी, but at the same time, she is so inspiring. I tell you, though we have not interacted a lot, but then she is so inspiring, so consistent in her seva, and she inspires me also. No, that's a lot coming from you. It was, I think, so beautiful. And I think the perfect finale for the Guru Story series. And you have just charged us all up for Seva so much. हम जहाँ पे हैं जो भी कर रहे हैं हम कभी कंप्लेन ही नहीं कर सकते। या हम लोग we're just doing a very comfortable and beautiful and polished seva, I think. So much work is happening in such remote areas. It is so, so inspiring, Didi. Thank you so much. We can see how busy you must be, and you are with such important people representing Art of Living. उसके बीच में भी आप आके सबसे बात कर रहे हैं गुरुदेव के बारे में, तो वो दिख रहा है आपका कितना भक्ति है लोगों से शेयर करने के लिए। Thank बस you so much. I'm so glad, to meet this wonderful sangha. भक्तों के साथ मजा आता है। थैंक यू सो मच। जय God गुरु। bless you all. Thank you. Jai Gurudev. Jai Gurudev, all of you. It was so nice being with you all in the last 5 days. And I think, like I said before, it is such an amazing end. Wherever we are, let us do our bit to take Gurudev's word, vision there in the best possible fashion. है ना? अब तो कोई complain नहीं कर सकते। Yeah, so we have some bhajans now for the day to end this series. You can all stay back if you have some time. And we will meet again in 24 days. So 24th to 26th July, we're going to meet once again, inviting some more beautiful teachers sharing their journey. That's all. You can all share in the chat section. How was it? Didi is also here. I'm sure she would love to read it. कि I'm आपको reading all the messages, chats. She's reading, we'll share the group link. Vishal, can you please share the WhatsApp group link here? And we'll have 2, 3 bhajans now. We can have some Devi bhajan. It's Friday. Our Devi Shakti Vandana ji is doing such lovely work. हम तो नहीं पहुंच पाए कश्मीर सेवा के लिए, सोचते हैं हमारी तरफ से वही गई हैं। Yeah. So let's stay back for a couple of bhajans. Jai Gurudev, everyone. You be happy, you feel happy, don't feel jealous, don't feel कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा ये सब। आप ये सुन रहे हो तो वो बस गुरुदेव ने इसीलिए आपको बुलाया है इस मीट में, याद दिलाने के लिए कि he is with all of us, he loves all of us so much. Yeah, and like I said, let us stop praying to Gurudev for our own, uh, professional life, personal life. आप बस मान के चलो आपका तो है, ध्यान रख लिया है, आप ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, आपका टिक मार्क है। हमें दूसरों का रखना है अब। Yeah, let us become an instrument to take this grace to others rather than thinking about or worrying about ourselves now. Yeah. So it's time for some bhajans. Jai Gurudev.
Okay, Gurudev. आंखें बंद रखते हैं. लेट्स कीप आवर आईज क्लोज्ड. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. अम्बे भवानी माँ देवी भवानी माँ. अम्बे भवानी माँ देवी भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. अम्बे भवानी माँ गौरी भवानी माँ. अम्बे भवानी माँ जगदम्बे भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. दुर्गे भवानी माँ काली भवानी माँ. दुर्गे भवानी माँ काली भवानी माँ. आत्मा निवास माँ देवी भवानी माँ. हृदय निवास माँ जगदम्बे भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. अम्बे भवानी माँ देवी भवानी माँ. अम्बे भवानी माँ देवी भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. दुर्गे भवानी माँ काली भवानी माँ. दुर्गे भवानी माँ काली भवानी माँ. आत्मा निवासी माँ देवी भवानी माँ. हृदय निवासी माँ जगदम्बे भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ. आंखें बंद रखते हैं थोड़ी देर. गोविंद नारायण गोपाल नारायण. 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 गुरु गुरु जय जय
गोपाल जय गुरुदेव. थैंक यू. गुड नाइट. थैंक यू सो मच दीदी. और उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे और खूब सारी और कहानियाँ सुनेंगे. और to everyone else, as Ramya said, we'll meet again 24 days later. Okay. Good night. Jai Gurudev. Keep listening. Keep living. बाय बाय, जय गुरुदेव. आप सब जा नहीं रहे तो मेरा मन नहीं करा बंद करने का. Take care, everyone. Please share your experiences on WhatsApp. I would love to hear. And it's not just me, there's a full team who has been working from designing the poster to connecting with teachers to keeping the group alive. I'll thank them all on the group soon. Yeah, Jai Gurudev. Bye bye. And thanks to all of you for being a part of it. That's why it could happen. आप लोग भी उतने ही आप लोग को क्रेडिट जाता है सीरीज का जितना किसी और को. जय गुरुदेव. बाय बाय. मैं बंद कर रही हूँ मीटिंग, वरना हम सब यहीं रहेंगे.